Greetings from Citizen Health and the Team Academy IAPS and Connect. And today, in the series of People's Health It Matters, we have Dr. Shobha Mishra, who is a professor and head of Department of Community Medicine, PDU Government Medical College, Rajkot, Gujarat. A very warm welcome to you, ma'am, on behalf of all the audience. Yeah, good afternoon, Ritu. I'm pleased to be with you here today. Thank you so much, ma'am. And same feeling is here. And today we are going to talk about the holistic medicine or the integrated approach towards health. Am I right, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. So I would like to start the session with my first question that this COVID-19 has affected a lot of us. So please, we will start with this question only, that what is the effect of it? Yeah, the crisis of COVID-19 that we have experienced, are still experiencing, has had a huge turning point in life of most of us. And, it was also a good opportunity to reflect on ourselves, our existence on Earth, our relationship with the nature. And it was an opportunity to learn from the past mistakes so that we can survive well with adaptation and harmony. See, we could not change the big events that took place or are taking place, but we can also change the way to handle the impact of those events on us. So what changes required during this COVID-19 pandemic, ma'am? Yeah, we start with the students, the children. They had to learn the teaching learning methods became online, the shopping methods became online, the working from people had to work from home. There was increasingly the concept of telemedicine also. It was quite a lot it took place, and people resorted to alternative medicines and other form of medicines for boosting immunity and keeping oneself fit and healthy. So we will primarily focus on this later on in our discussion, how this happened and what it means. So when we talk about fit and healthy, I would like to know, ma'am, what is health? जैसे कोई भी बीमारी की अनुपस्थिति होना पर्याप्त नहीं है स्वस्थता को समझने के लिए, स्वास्थ्य को समझने के लिए. तो WHO ने जो डेफिनेशन दी है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी. ये एक सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक कल्याण, मानसिक कल्याण की एक स्थिति है. कोई भी एक इंसान यदि निर्बल लगता है या रोगग्रस्त नहीं लगता है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो नहीं दिखता है, लेकिन स्वस्थ हो या निर्बल ना हो. जैसे कि कई बीमारियां हैं जो विटामिन डेफिशिएंसी की कमी से होती हैं, या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, तो वो तुरंत तो दिखती नहीं है, एक टाइम निकल जाता है बॉडी में उनके रिस्क फैक्टर्स को प्रवेश होने के बाद फिर वो दिखता है. तो जो देखने से हमें लगता है कि इंसान स्वस्थ होगा, ऐसा नहीं है. और हेल्थ के जो 4 डायमेंशंस मैंने बताए, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, which is important, to be healthy. सो मैम, अगर हेल्थ हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर रोग के बारे में बात कर रहे हैं, डिजीज, अगर डिजीज क्या है, या अगर इसको डिटर्मिनेंट्स की तरह देखें कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. हाँ, सो डिजीज इज अपोजिट टू हेल्थ, लेकिन रोग की अनुपस्थिति पर्याप्त नहीं है डिजीज को भी समझने के लिए. डिजीज को इफ वी वांट टू डिफाइन डिजीज, तो ऑक्सफोर्ड की डेफिनेशन ले तो इट इज द कंडीशन ऑफ द बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर द फंक्शंस आर डिरेंज्ड और डिसरप्टेड. उसकी जो कार्य क्षमता है या तो विक्षिप्त हो चुकी है या बाधित है. और बीमारियों में देखें तो ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई डिजीजेस इनटू कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. जैसे देखें तो कोविड-19 था, ये संक्रमण वाला रोग था ना, तो उसमें वायरस इज द कॉजेटिव एजेंट, जो जैविक है, बायोलॉजिकल है.
और इसमें जब संक्रमण की बीमारियां होती हैं तो ये इम्पोर्टेंट होता है समझने के लिए कि समाज में इंसान है जो इन्फेक्टेड है, जो संक्रमित है, और उनमें से हेल्दी पर्सन को रोग होने में कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन डिजीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एनी डिजीज के लिए। दूसरी तरह देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, जिसमें बायोलॉजिकल एजेंट नहीं है लेकिन वहाँ जोखिमी लक्षण है, रिस्क फैक्टर्स है डिजीज को होने के लिए। और डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो जैसे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट है, जहाँ कॉजिटिव एजेंट है, इवन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, which are there are which are also responsible to cause so many environmental and pollution related, air pollution, soil pollution, those diseases happen due to one. So environment is very important, which is around us as a determinant of health. दूसरे हैं जैसे सोशियो इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, और very important now that we will discuss is the रहनी करनी, lifestyle, and even political factors can be some determinants of health. ना इन सब डिटर्मिनेंट्स को तो हमने अच्छे से समझा है, लेकिन कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट्स है जैसे रोल ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन और इंटीग्रेटिव मेडिसिन इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, जैसे कि रोल ऑफ अल्कलाइन डाइट in the prevention of diseases, and lifestyle like fitness, importance of sleep, and positive mind as a part of spiritual awakening. So in fact these are very less mentioned, so we chose to discuss on it today, so that because we talk on these aspects, they were increasingly being used during the pandemic time. So, and they require not only a medicinal approach, also non-pharmacological approach at the community level. ओके, दैट्स ग्रेट। और अभी जैसा सेशन का नाम ही हमने रखा है होलिस्टिक अप्रोच या इंटीग्रेटेड मेडिसिन, अभी आपने ये टर्म लिया मैम, अब मैं जानना जरूर चाहूंगी कि होलिस्टिक मेडिसिन या इंटीग्रेटेड अप्रोच है क्या चीज? Holistic medicine, has been defined by Canadian Holistic Medical Association as it is a system of healthcare that fosters cooperative relationship among those who are involved, leading to optimal attainment of mental, physical, emotional and social aspects of health. And there is a need to look at a person as a whole by analyzing all these factors plus environmental factors, nutritional factors and lifestyle values, and taking all those into account. There is an effort to find out the causes of the disease and root out the causes of the disease from the body, and not only suppressing the symptoms of the disease. So what are the different approaches, ma'am? Is there any other therapy other than are there any therapies other than allopathic, and if it is, then how it is work? होलिस्टिक मेडिसिन की जब आपने बात की तो कुछ और डेफिनेशंस को हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे बिफोर गोइंग इनटू द डिस्कशन फर्दर। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, complementary medicine is used along with the conventional medicine in the country, like ours is allopathy. So jab for example a surgeon uses aromatherapy to reduce the discomfort of the patient after surgery, using acupressure, using hypnotherapy and using yoga, meditation along with the conventional medicine. When it is used, it is known as complementary medicine. And another term we should understand is alternative medicine. ना कोई पेशेंट को कैंसर हुआ है और उसको सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी एडवाइस की है, लेकिन वो लेना नहीं चाहता है, एंड द पर्सन wishes to go for like diet therapy with grapes therapy and other therapies instead of the allopathic therapy, then it is known as alternative medicine. And all these medicines are the main approaches, holistic approach, that is taking out the causes from the root and not only suppressing the symptoms, and the person is taken as a whole.
और जब ये सब चीजों को साथ में यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं complementary and alternative medicine along with conventional medicine, for which some good quality evidences of effectiveness and safety are available. And as you said, yes, there are a range of these therapies a country can have. Like apne country mein we have a range from Ayurvedic to vitamin therapy. Or briefly, I will mention some concepts of each of them. Like, so Ayurvedic medicine is a comprehensive healthcare which emphasizes on places emphasis on body, mind, and spirit, and the physician tries best to bring person to a normal state and equilibrium with the environment, and uses holistic approach like diet, exercise, meditation, massage, herbs, and other things. That is, and we know thousands of years ago हमारी country में Ayurvedic is so much prevalent since times immemorial. कई कंट्रीज में अभी भी जैसे पार्किंसनिज्म डिजीज है, तो उसके लिए म्यूकोना प्लूरियंस एक हर्ब है जो कि कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ एल डोपा, व्हिच इज वेरी इफेक्टिव एंड सेफ. सो दैट these we should have knowledge of all this as a common man also, and any healthcare provider. Another is homeopathy. Homeopathy जर्मनी में 1800 में शुरू हुई थी. Samuel Hahnemann was the German physician. Now in this, it is a low cost and very effective type of therapy. Very first aid में जैसे earache है, common flu है, common cold है, अभी तो rheumatic arthritis है, depression है, and other areas people do go for homeopathy. And the concept is here that like cures like. मेडिसिनल जो सब्सटेंसेस है वेरी लो डाइल्यूशन में जब देते हैं वो क्योर करता है, वही हम वो लोग हाई डाइल्यूशन में देते हैं तो वो कॉज डिजीज करता है. फिर देखें तो तीसरा है नेचुरोपैथी. नेचुरोपैथी द कंसेप्ट इज दैट द बॉडी हैज एन इनहेरेंट पावर ऑफ हीलिंग, and the physician works through supporting this power by fasting, hydrotherapy, mud therapy, sun therapy, diet, yoga, meditation, acupressure, all these together. And the approach is holistic, like finding out the factor which is causing and rooting out the factor from the body. So there is an holistic approach in this also. So body is जो inherent property of healing establishes, maintains and restores health. फिर दूसरे भी हैं जैसे सिद्धा है. साउथ इंडिया में सिद्धा विच ऑल्सो हैज अ होलिस्टिक अप्रोच, पर वहां जो एम होता है स्पिरिचुअल अटेनमेंट एंड इमॉर्टलिटी, दैट गोल इज वेरी हाई. वैसे यूनानी है जो कि ग्रीस और साउथ एशिया में प्रेवलेंट था, एंड दिस ऑल्सो हैज अ होलिस्टिक अप्रोच. एक और है कि आजकल के विटामिन थेरेपी, अभी देखना कोविड में जिंक, विटामिन डी, विटामिन सी वाज पार्ट ऑफ all treatment. So vitamin therapy or orthomolecular therapy is increasingly being used because many diseases are also due to deficiency of vitamins, minerals and proteins, certain type of amino acids. Traditional Chinese medicine, we have heard that it also uses the same type of holistic approach. So these are a range of therapies, but सब थेरेपी का एक ही काम है, do no harm to anybody. तो मैम कैसा हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि एलोपैथिक थेरेपी अलग है, होलिस्टिक मेडिसिन थेरेपी अलग है, जिसमें आयुर्वेदा और सिद्धा और यूनानी आते हैं ऐसा, और विच वन इज बेटर? अगर उस डिस्कशन में नहीं जाना है कि विच वन इज बेटर, बट फिर भी एक ओपिनियन मैम आपका.
ये जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो तो रहना ही होगा, क्योंकि जब भी ऑर्गन डैमेज है या कोई भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक, व्हेन वी टॉक ऑफ डिसरप्शन और फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स एंड इन इमरजेंसीज एंड ट्रॉमा, देखो कार से हम एक्सीडेंट हो गया तो हम कोई एनेस्ट्रोपैथ को या उसको नहीं बुलाएंगे, वी हैव टू टेक दैट टाइप ऑफ गो टू दैट. सो it is not that one is better, but we should understand when to use what and understand the benefits of all type of therapies and refer patients where need be. So all healthcare providers, they should have some basic knowledge of all this, and so that they can refer patient as a team to each other. And if I talk of these therapies, they are really very good in terms of preventing disease, managing the chronic diseases, and addressing the emotional, spiritual, and mental aspects needs of an individual. So here they survive, excel in these areas. And I was one I give you my example. I've been admitted, I got myself admitted in naturopathy for detox. So I did just a rapid survey of the wards. So I saw patients taking rheumatoid arthritis था वहाँ पे, even diabetes, hypertension, allergies, asthmas के patient, dermatitis, psoriasis के patient. So I found that ये जो patients वहाँ पे आए, उन्होंने 6 to 7 एलोपैथ्स को refer किया है, उसके बाद पहुंचे हैं. So that is the need कि we, even as allopaths, should understand, should be aware of these therapies. We should work as a team. ओके मैम, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ एफर्ट्स लिए जा रहे हैं इसको करने के लिए? अभी रिसेंटली मैं देखा कि अभी जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अफेयर्स, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में आयुष करके इंट्रोड्यूस हुआ था, दीज थेरेपीज वर इंट्रोड्यूस एंड दे आर पार्ट ऑफ द नेशनल हेल्थ सिस्टम. सो नाउ द पार्ट, जैसे आयुष इज आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी. तो अभी देखा कि पैंडेमिक के टाइम, बेस्ड ऑन आयुर्वेदिक लिटरेचर एंड साइंटिफिक पब्लिकेशंस, these were advocated to boost immunity and self care. Like आपने सुना होगा कि गर्म पानी पियो, और योगा, मेडिटेशन का हर्ब्स इंक्लूड करो डाइट में, जैसे क्यूमिन है, जीरा है, हल्दी है, धनिया है, एंड गार्लिक है. दे आर एल्कनाइक एजेंट्स एक्चुअली. तो इन सब का प्रयोग करें. फिर उकाड़ा, आपने सुना होगा कि उकाड़ा का काफी प्रचलन रहा है कि उसमें जो हमारे हर्ब्स हैं, ब्लैक पेपर, दालचीनी, रेजन्स, तुलसी का इम्पोर्टेंस, हनी का इम्पोर्टेंस, लेमन का इम्पोर्टेंस, उससे उकाड़ा. एंड हल्दी का दूध पीना, द येलो मिल्क, गोल्ड मिल्क करके काफी हॉस्पिटल्स में यूज हुआ, लोगों ने यूज किया. और स्टीम इनहेलेशन एट द टाइम ऑफ ड्राई कॉफ हो या थोड़ी हल्का खांसी जुकाम हो, सोर थ्रोट हो, तो क्लव के का पाउडर एंड हनी के साथ, और स्टीम इनहेलेशन यूजिंग कैरेवे लीव्स, अजवाइन और पुदीना का जो स्टीम इनहेलेशन था. पर ये भी इंस्ट्रक्शंस थे कि लोग अर्ली जाएं, जब थोड़ा एक आध दिन में ये नहीं हो रहा है सोर थ्रोट, तो दे शुड सी द डॉक्टर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ ऑयल इन द नॉस्ट्रल्स ना, प्रतिमर्श नस्य, एंड in the mouth cleaning by the oil and then spitting out. So these were advocated and very increasingly used. I've seen during the pandemic times, to boost immunity and to prevent the diseases. मैम, एक टर्म और लिया था आपने, अल्कलाइन फूड. हाँ, यस. तो ये क्या है और ये कैसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हेल्प कर सकता है? I'll give you a background of this. Ki acid-base balance plays a very important role in the body chemistry, and the normal body chemistry is 80% alkaline and 20% acidic. And even generally in healthy state, the blood is alkaline because of its alkalinity. The blood can transport the toxins and acids from the tissues to the discharge point.
लेकिन जब एसिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है, तो क्या होता है कि द ब्लड इज नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट द एसिड, कार्बोनिक एसिड टू द, एंड दैट इंक्रीजेस द, सो सभी बीमारियों में एसिडोसिस हो जाता है. So so every food, every food leaves some type of alkaline or acid ash in the body, and we should choose from the list which are alkaline food, which are acidic food, so that we take 80% of the alkaline food and 20% of the acidic food to maintain the body chemistry and to have perfect health and fitness. So may we please know some examples of alkaline food, ma'am? जनरली देखे तो एसिडिक फूड की मैं बात करूं तो ऑल सीरियल्स, प्रोटीन्स, नॉन वेज आइटम्स, व्हाइट्स, salt, sugar, butter, all these are alkaline food. Alcohol, tea, coffee, of course, these are, all these are excessive of the spices also. These are all acidic food. And if we talk of the alkaline food, so all type of vegetables, whether they are leafy, non-leafy, or roots and tubers, legumes, nuts like almonds, and the herbs which I mentioned, spices जैसे कि garlic and jeera and coriander and haldi. These are all these are the alkaline food, and all citrus fruits जैसे lemon, amla, and all pineapple, all juicy fruits, they are very important to maintain the alkalinity of the food, of the body, to maintain the balanced chemistry. थैंक यू मैम. और एक लाइफस्टाइल, कोविड-19 पेंडेमिक ने और कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, पर लाइफस्टाइल जरूर कुछ ना कुछ मॉडिफाई हो गई है. बट एक ऑप्शन में जरूर ओपिनियन मैम आपसे चाहूंगी कि हमें अपना हेल्दी लाइफ मेंटेन रखने के लिए क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए. एक मुझे पॉइंट याद आया अल्कलाइन फूड में बिफोर गोइंग टू दिस कि जो लेमन है ना वो दिखता एसिडिक है, तो लोग सोचते हैं कि एसिडिक फूड है, नहीं लेना चाहिए. बट लेमन इज एक्चुअली एन अल्कलाइन food, very important for the body, full of vitamin C, and after digestion it leaves an alkaline ash, the potash, in the body. So wo ek error hai to believe that it is an acidic food. Yeah, now I come back to the question like which you asked was what are the other lifestyle, तो हमें जब alkaline food की बात करें तो let us talk of eating habits first, so what we are what we eat, and बोला ही है कि sometimes food is your medicine and medicine your food, in the whether you're healthy or you're the sick, it was a saying, it is the saying. So eating में मैं कहूँगी कि choose from those alkaline and acidic, 80% alkaline, and seasonal fruits and vegetables, and freshly cooked, जैसे store करके नहीं रखना चाहिए. Eat when you cook when you are going to eat, like, और रेफ्रिजरेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए. ईट व्हेन कोविड ने सिखाया है घर में खाना खाना है, काफी कम हो गया था, अवेलेबल ही नहीं था, तो शायद थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा हो बाहर का फूड का, थोड़ी शिक्षा मिली हो हमें. दूसरा है खाना जब चाहिए जब भूख लगती है ना. ईट व्हेन यू आर हंग्री एंड कीप द स्टमक 3/4 फुल, पूरा फुल नहीं हैवीली करना चाहिए. ईटिंग टाइम भी इम्पॉर्टेंट है कि हम 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लें, 11 से 1 के बीच में लंच कर लें, और बिफोर सनसेट हम डिनर कर लें. लोगों को लेट नाइट के आजकल तो 10-11 बजे, तो दैट इज नॉट, जब ये लेट आप दिन को खत्म करते हो तो लेट उठते हो, आपकी शुरुआत अगले दिन की लेट होती है, तो 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए. दूसरा देखिए, डाइनिंग टेबल पे बहुत बातें नहीं कर दीजिए, आराम से ना स्लोली चू करके वी शुड विद अवेयरनेस खाना होना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स दिस टी एंड कॉफी वो सब मैंने बोला है कि अवॉइड. पानी का बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन ड्रिंक नॉर्मल वाटर एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर विच इज बेटर, एंड 10 to 12 glasses ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी. और खाने के पहले और खाने के बाद 20 मिनट कम से कम पानी नहीं पीना चाहिए, because water is not a food,
So it disturbs the digestion. एंजाइम्स का डिस्टर्बेंस हो जाता है तो डाइजेशन में, अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करेगा. यदि बहुत ही है तो बटर मिल्क सिप कर लेना चाहिए बीच बीच में, या सिप ऑफ वाटर, बट वाटर शुड नॉट बी टेकन. सो ईटिंग में ये वाली चीजें थोड़ी जनरल है, हमें ध्यान रखना चाहिए. जनरल रूटीन में तो कहने का नहीं चाहिए, पर कह ही रही हूँ कि डेली बेथिंग, डीप ब्रशिंग टीथ, एंड टंग क्लीनिंग, एंड इवैक्यूएटिंग बॉल एंड ब्लैडर रेगुलर, नॉट अर्जेंसी पे नहीं आ जाना चाहिए. सनशाइन, एक्सपोज वन सेल्फ टू सनशाइन. 10 नून की जो होती है ना धूप, 10 to 15 minutes a day, which should become a part of our habit. And sleeping time. People sleep very late nowadays, so sleeping time, get up before sunrise and sleep before 10. And hours of sleep is also very important. कि भाई आप 64 years से कम हो तो अब 6 घंटे आपको 7-8 घंटे की नींद काफी है. फिर तो नींद कम ही अपने आप होने लगती है. 6 घंटे की नींद तो कम से कम होनी चाहिए. और मैंने देखा स्पिटिंग हियर एंड देयर, क्लेanliness, people spit here and there, which is very irritating. मैं देखती हूँ सिनेमा हॉल्स में and all that. So general cleanliness बहुत important होती है. तीसरा फिटनेस. तो जब खाने के बाद भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, और कॉन्शियसली रिलैक्स करना चाहिए जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो. एक शवासना करके होता है ना, एकदम शव के जैसे पड़े रहना 15 मिनट तक, एकदम रिलैक्स करता है बॉडी को, एंड इट बैलेंसेस द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो काम्स द माइंड एंड रिलैक्सेस द बॉडी. टीवी वगैरह का कम हो जाना चाहिए. 8-10 घंटे हो गए आजकल. 1-2 घंटा टीवी इज ओके टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस. तो और कभी कभी प्लेजरेबल टाइम फैमिली के साथ बाहर जरूर जाना चाहिए. सेल्फ मसाज वगैरह, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह 30 मिनट 5 दिन एटलीस्ट वीक में करें, 30 मिनट रोज, और एटलीस्ट 5. वॉकिंग, गार्डनिंग की हैबिट होनी चाहिए. और जैसे फोर्थ डायमेंशन इज स्पिरिचुअल हेल्थ, which is very important. I think nowadays कि stressors इतने हो गए हैं, तो we had to have positive mind as part of spiritual awakening, like self observation, आत्मनिरीक्षण, आत्म जागृता. और उसमें यम नियम का पालन कोई करे तो रियली इट वुड हेल्प. लाइक यम इज द principles that we should follow in the society, and niyam is personal rules that we should follow, like ahimsa, asteya, aparigraha, satya, tapas, संतुष्टि होना, celibacy and surrender to God, swadhyay. All these they calm the body and mind, and it is very important for relaxation of the body. Prayers करते हैं लोग, अच्छी बात है, which enhances positive thoughts and decreases negative thoughts. We should focus on our breathing. लोग जनरली सुपरफिशियल ब्रीदिंग करते हैं. कॉन्शियसली ब्रीथ, डीप ब्रीदिंग, बिकॉज ब्रीदिंग इज लाइक एन एंकर इन द बॉडी, which reconnects, re-establishes relationship between body, mind and spirit, जो आयुर्वेद बोलता है, emphasis on that. And it tells the mind कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई worry मत करो. Deep breathing में you can have those. So these things are really important for a common man and everybody. Even illiterate persons can be aware and practice this in their life. और ये villages तक पहुंचना चाहिए, should reach to the villages. थैंक यू सो मच मैम, इतनी सारी बातें बताने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताने के लिए, यूजफुल एज वेल. कोई एक लास्ट मैसेज मैम हमारे ऑडियंस के लिए? तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो स्वास्थ्य कर्मी है, उनको बेसिक प्रिंसिपल्स एंड बेसिक नॉलेज अबाउट ऑल दीज प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए, थेरेपीज, एंड दे शुड वर्क इन अ टीम. अभी तो मैंने सुना है कि ये सब विल बी अ पार्ट ऑफ द मेडिकल करिकुला ऑफ ऑल मेडिकल स्कूल्स. ऑल थेरेपीज विल हैव सम बेसिक प्रिंसिपल्स, so that people can refer early. And
सेकेंडली टू द पब्लिक, उनको भी इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, ना ही जो टीवी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, एविडेंस नहीं है उनका कोई, तो वन शुड ऑलवेज कॉन्टैक्ट एंड टेक एडवाइस फ्रॉम द फिजिशियंस, एंड शुड बी हैव एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। मैं बोलूंगी कि एक समाज तभी फलता फूलता है और मजबूत होता है जब उसका प्रत्येक सदस्य मजबूत हो। एंड ये जो 4 आयाम है, सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, ये सारे जो आयाम है, इनको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कलेक्टिव लेवल पे, समाज के लेवल पे, और ये सबकी जवाबदारी है। इट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी जवाबदारी है, सबकी भागीदारी इसमें इम्पोर्टेंट है। और अभी जो कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो भीड़ में मास्क का, यदि डिस्टेंसिंग का, अभी भी वैक्सीनेशन का मेनली कि पीपल शुड, इफ दे आर लेफ्ट आउट, शुड टेक द वैक्सीनेशन। और लास्ट में मैं बोलूंगी कि stay fit, stay healthy, stay safe, and keep laughing because laughter is very good medicine. थैंक यू सो मच मैम इतनी सारी बातें करने के लिए और इतने यूजफुल टिप्स देने के लिए। थैंक यू सो मच, हमें बहुत मजा आया और आई होप कि सब लोग इसे देखेंगे और शेयर करेंगे इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें आपने बताई वो फॉलो करेंगे, फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, बिल्कुल आपकी तरह जैसे आप हैं। आई रियली विश कि एटलीस्ट मैं भी आपके जैसे हो जाऊँ, मेरी भी स्किन इतनी ग्लो हो। आई नो कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करती है, इसीलिए ऐसा है। मुझे बहुत मजा आया मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, Thank you, and I also was very happy to talk to you. Thank you. Thank you, ma'am.